firstly, thank you so much to all of you for joining us at this on this wonderful occasion of celebrating all your writing, and all of you have made it to the shortlist of the JCB Prize for Literature this year. So congratulations first, and we are in the middle of so much festivities in Jaipur right now, so I was just wondering, you all have been here for a bit. How has it been so far? I'm just thrilled to be here on the shortlist of such a prestigious award. Very thrilled to be meeting such veteran writers, intermingling with them, talking to them, getting to know different kinds of writing. Right. And it's a great experience to meet really experienced writers. I mean, I think these festivities sort of started a couple of months ago, and with, I think, the Ganesh Chaturthi that happens. It's huge in this part of the country, especially in Bombay and all. And when we think of Bombay, of course, you have written a whole novel on it, your debut novel. So you just made it to the list. So congratulations first for that. And yesterday, I think, Srini, you and I spoke about this, that how your debut novel being the Bombay novel, I mean, I feel like that's a subgenre in itself, in its own right now. And we've seen like literary stalwarts such as Rohinton Mistry or Salman Rushdie, or even in recent times, say Lindsay Pereira or Manu Joseph, craft their own Bombay novels. How did you go about it, and what were you offering to your readers about Bombay that wasn't done before? So the main thing I wanted to put across, and the main thing that fascinated me, is how Bombay is a city that rewards ambition and it rewards risk-taking. And so it invites these two elements. You see, there's a certain mythology of Bombay as the place where your dreams can come true. And that's really where I took off from, coupled with the fact that I felt it's quite rare for people in Bombay to be fully content. Everybody always wants more, which has very little to do with how much you already have. So there's this buzz in the air, I feel, which created by people, created by the city itself, I guess, of wanting more, which is reflected in the title of my novel, The Secret of More. Yeah. I focused on the textile and film industries because they've been the commercial backbone of Bombay, especially and through the 20th century. So that's where I took off from, and I thought it would be fascinating to go back into the early days of filmmaking when the film industry started off almost as a cottage industry. Right. People were still exploring what the technology could achieve, what kinds of storytelling could happen. In many ways, they were just flying by the seat of their pants. They were just discovering things as they were making things up. And I thought that would be a fascinating era to go back to, in a way that is the industry which has, to a large extent, created this mythology of the city as the and place. it's, of course, defined, it's taken it beyond the borders of Bombay. That's right. Across global borders as well. But I also wanted to ask you, you have written short stories before you have written a novel. Which do you prefer? I love both, and I think it really depends on what kind of story is demanding to be told at that point of time. In a short story, you've got to present an episode or a phase of a character's life, which ideally should have implications far beyond the end of the story. So that's a very particular kind of challenge, which takes a particular kind of skill to be able to build a before and an after within your short story. Right. The short stories that I wrote for my collection, none of them could have been novels. I mean, those stories were peculiarly suited to that form, that genre. You could call it a sort of a fragmentary experience of life, whereas in a novel, it's more about world building. You have the luxury of hundreds of pages to explore your characters' interior lives and develop them over a long arc of time and place. You can really delve into exploring the characters and the setting. Right. I mean, do you all agree at this table? I would just like to ask. The novel is the staple of literature, fortunately or unfortunately. Right. And as a translator, for me, translating Manoranjan Byapari's Chandal Jeevan trilogy is a necessary apprenticeship for any translator to translate a very long work.
I haven't written a very long work as an author, so I don't know about the challenge to an author. But for a translator, translating a very long novel is difficult is not the word. It's a tough experience. Translation is essentially pure labor. Right. For Shubhimar Mishra, you have translated. Yeah, but it was short fiction. Yeah. Short fiction. When you translate a story, it's done. There's a sense of completion. You have to translate 10 stories, so you get 10 sense of completion moments. Right. But one novel isn't complete until the whole thing is done. True. कहानी और उपन्यास दोनों बिल्कुल अलग अलग विधा है। दोनों की अपनी अपनी कसौटी है। और उपन्यास ऐसा नहीं होता है कि आप कहानी लिख रहे हैं और कहानी लिखते लिखते ऐसा लगे कि इसको थोड़ा फैला कर उपन्यास कर दूँ, वो सही तरीका नहीं है। कहानी के रूप में ही कहानी आएगी और उपन्यास को आना होगा तो उपन्यास के रूप में ही आएगा। वो दोनों अलग अलग फॉर्म है। जो तेजस्विनी भी बोल रही थी जी कि वो निर्भर करता है कि कहानी कैसी है जो आप लिख रहे हैं, वो कहानी के रूप में आएगा या फिर वो एक उपन्यास के रूप में आएगा। हाँ, लेकिन जो शुरुआत उसकी होगी ना, वो पहले से तय हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब भी उपन्यास, मैंने 2 ही उपन्यास लिखे हैं, तो पहले से ही मतलब एक जो दिमाग में ख्याल आया वो उपन्यास का ही ख्याल था। तो कहानी के चलते चलते ऐसा लग, जैसे मेरी कुछ ऐसी कहानियाँ जो बहुत लंबी है। आमाजगा नाम की एक कहानी है जो 70 पेज की है। अब उसमें 5-10 पेज और जोड़ देते हो तो वो एक नॉवेला बन जाता है, छोटा उपन्यास बन जाता है। लेकिन चूंकि फॉर्म उसका कहानी का था और लिमिटेशन नहीं होती कहानी में भी, कोई आप कितनी भी लंबी कहानी लिख सकते हैं। तो ये तो अलग अलग विधा है, दोनों की अपनी शर्तें हैं, दोनों की अपनी खूबसूरती है। और जो शॉर्ट स्टोरी जैसे आदत हसन मंटो, वो बेसिकली एक कथाकार है, वो एक कहानीकार है। उस तरह के कृष्ण चंद्र, बहुत सारे ऐसे उर्दू के भी, हिंदी में भी। भीष्म साहनी का बड़ा उपन्यास है तमस, लेकिन वो उपन्यासकारों के रूप में उतने नहीं जानते जितने कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। तो दो में से एक पहचान किसी भी एक लेखक को मिलती है। I mean, Vikramajit, there's a question I wanted to ask you as well, because Mansoor sort of lies between not being too long a story, but it's also not, it obviously does not fall anywhere within the purview of a short story. But it's so beautifully woven together. Thank you. And, it just creates these, imageries that brings alive those worlds that you talk about. When it comes to the format of your stories, you have written about architecture, Yes, you have written travelogues before. How did you decide on doing this format for Mansoor? The format of the story itself. The story itself, and the length was something that really intrigued me, because in the shortlist I felt like yours was the shortest in a lot of ways. Yes. And but it packs in so much. So how did you manage to do that? Well, thank you. I think it's because the material I was writing about itself is miniature. It's small. Yeah. So aside from the actual genesis of the novel and where the idea for doing this little work, which I see as a sort of adventure and a huge learning process for me. But in terms of its physical length and its structure, I just looked at the miniatures and said that anything I do has to somehow echo and follow the same format and the physical structure. So it had to be something very small. Unfolds in the span of one day. Right. Yeah, and the chapter titles, of course, are a very typical nod to the typical, captions which have later been attributed to Mughal miniatures. Right. So you have so and so and so. And the entire thing, each of those chapters actually is a miniature in itself. So hopefully you enter those chapters, you become a part of it. So all that has been very trickily designed. So and ultimately it falls into the format of a very short novel, which unfolds in the span of a day and a bit more. And that itself is a miniature. So you have a complete picture, separate miniatures with lots of simultaneous things happening in them, exactly like a miniature painting, which we have all looked at. I was looking at the long list and the short list of the JCB prize this year, and it was very interesting to see, especially in the short list, that you have so many of you who are on the list for the first time, and but you also have Mr. Byapari and Mr. Murugan who've
already been on the list before. I was just speaking to Manoj about this. Recently he's mentioned in an interview to a newspaper where he said that he does not let his personal views or opinions seep into his writing much. But you know, when we're talking about identities, we have Mr. Murugan, who has always so strongly written about, you know, identities of, especially with Firebird. It is about a farmer, and his identity is very intrinsically linked to his land, the land he occupies, which gives him his life, which gives him everything that he's built. And he's also drawn heavily from his own life for it, right? Have you ever consciously tried to keep away your personal from the professional? And in this case, I'm saying professional, the lack of a better word, because this is a creative field. In any creative field, the personal is front and center. It is what informs your work. So, has that ever happened? அதில் பொதுவாக என்னுடைய இலக்கிய பார்வை அப்படின்னு சொல்கிறது மனிதர்களுடைய மனங்களை ஆராய்வது தான். அதுக்காக தான் நான் வந்து எழுதுறேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது ஒரு கேரக்டர்ஸுடைய பர்சனல் விஷயங்களுக்குள்ளே அதை போகாமல் மற்ற விஷயங்கள் எழுத முடியாது. நிலம், அந்த சூழல், இதெல்லாமே அவங்களுடைய மனோபாவத்தை எப்படி உருவாக்குது, அவங்க எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையெல்லாம் பார்க்குறது தான் என்னுடைய இது. அப்புறம் இன்னொன்று, எந்த ஒரு கேரக்டர் அல்லது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அதை வந்து என்னுடைய பர்சனலாக என்னால் மாற்றிக்க முடியும். அதுக்கான ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து அந்த பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பயிற்சியும் எனக்கு வந்து இருக்கிறதுனால என்னால் இதை செய்ய முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். It's very obvious in the way he crafts his worlds, he crafts his characters, where he sort of sinks into the skin of the characters as well. And but you know, of course, we have been able to access his work through translations. So I just wanted to understand that, have you ever read like a really, really bad translation of your work? இல்லை, அப்படி வந்து ஒட்டு மொத்தமாக பேட் டிரான்ஸ்லேஷன்னு சொல்ல முடியாது. ஏதாவது சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஒரு இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுல சின்ன பிரச்சனை இருக்கும். அப்புறம் வந்து நான் ஒரு பெக்கூலியரான ஒரு ஏரியாவை எழுதுறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய மரம், செடி, கொடி, இதனுடைய பெயர்களை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுல சிக்கல் இருக்கும். அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் தான் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுவும் நிறைய டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் வந்து என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியுது. அதை தாண்டியும் சிலது அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஆனால் அதே சமயம் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனில் மோசமான விஷயங்கள் தான் நடக்கும் அப்படின்னு நாம் நினைக்கக்கூடாது. நல்ல விஷயங்களும் நிறைய நடக்கும். என்னுடைய டிரான்ஸ்லேட்டரோடு நான் வந்து பேசும்போது அவங்க வந்து நான் எழுதியிருக்கக்கூடிய தமிழில் எழுதியிருக்கக்கூடிய சில தொடரை வாக்கியத்தை காட்டி இது வந்து அவ்வளோ கிளியராக இல்லை, இது என்ன சொல்ல வர்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. அப்போ கேட்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன், அதை அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நான் தமிழ்லேயும் அதை சரி பண்ணுறேன். சில நாவல்களுடைய சில இடங்களில் வந்து ஒரு பத்தி அந்த மாதிரி கூட சேர்த்து கூட இருக்கேன். அது என்னுடைய டிரான்ஸ்லேட்டருடைய சஜஷன்னால் அப்படி நான் சேர்த்தும் இருக்கிறேன். அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களும் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் நடக்கும். 1-2 எங்காவது ஒரு தகவல் பிழை இருந்துச்சுன்னா கூட அதை சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரோட இது பண்ணும்போது அப்படி என்னுடைய ஒரிஜினல் இதில் சில திருத்தங்கள் இல்லாமல் என்னால் செய்ய முடியுது. Okay, so it's a collaborative process, and yes. In his last response, he talked about a writer has to get trained in being able to write about people's minds and can he elaborate on that? What does he mean by training? அது வந்து ஒரு ரைட்டருக்கு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அப்சர்வேஷன் மூலமாகத்தான் அது வரும். அப்புறம் நீங்கள் திரும்ப தொடர்ந்து எழுதுவதுங்கிறதும் ஒரு பயிற்சி. எழுதுறது எப்போவோ ஒரு முறை எழுதுறது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ரெகுலராக எழுதணும். அப்சர்வேஷனும் ரைட்டிங் இது தான் நான் வந்து ட்ரெயின்டு. ஆமாம், எனக்கு ஒரு நாளுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 10 வரியாவது நான் எனக்கு எழுதினா தான் எனக்கு மனசுக்கு நிறைவாக இருக்கும். குறைஞ்சது ஒரு டைரி குறிப்பாவது நான் எழுதுவேன். அதனால் அதைத்தான் நான் ட்ரெயின்டுன்னு சொல்கிறேன். அப்சர்வேஷனும் அப்புறம் அந்த பாத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து ஒரு ஆள் மோசமாக நடந்துக்கிட்டால் கூட நான் என்ன யோசிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு ரைட்டருடைய கோணம் வந்து ஏன் இந்த இடத்துல அவங்க இப்படி மோசமாக நடந்துக்கிட்டாங்க, அதுக்கான என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்கும், அப்படி தான் நான் வந்து யோசிப்பேன். மோசமாக நடந்துக்கிட்டாங்களேன்னு அவங்க மேலே குற்றம் சொல்கிறது இல்லை, ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டாங்கன்னு அவங்க கோணத்திலிருந்து யோசிக்கிறேன். அதுதான் எனக்கு ரைட்டருக்கான ட்ரைனிங்னு சொல்கிறேன். While we are on the subject of translations, of course, मैं मनोरंजन जी से पूछना चाहती थी कि आपके किताबें हम तक
ट्रांसलेशन अनुवाद के रूप में आते हैं, अंग्रेज़ी अनुवाद के रूप में। अभी जो पेरुमल जी कह रहे थे कि जब आप ट्रांसलेशन के लिए भेजते अपना काम, तो ये होना चाहिए कि जो ट्रांसलेटर है वो बहुत ऑब्ज़र्व करे अपने आसपास के लोगों को, जो कैरेक्टर्स है वो भी वो ऑब्ज़र्व करे, ताकि उनका जो एक स्पिरिट है, जो एसेंस है, उसको वो अपने ट्रांसलेशन में डाल सके। तो आपको कैसा लगा जब आपकी किताबें ट्रांसलेट किए गए, वी रामास्वामी जी ने जब वो अनुवाद किए, तो आपको वो पूरा जो मेथड था, प्रोसेस था, वो कितना कोलैबोरेटिव था? आप दोनों ने मिलके एक साथ कितना काम किया, कितना आप दोनों में बातचीत हुआ जब आपने ये पूरा प्रोजेक्ट लिया आप दोनों ने ट्रांसलेशन का? बातचीत हम दोनों में बहुत ही कम हुए, अच्छा। लेकिन रामास्वामी दादा को ऊपर हमारा भरोसा था। ओके। उनके बारे में बहुत लोगों के पास सुना कि बहुत अच्छे ट्रांसलेटर है। इन्होंने पहले भी कई काम किए जिसका प्रशंसा हुआ। तो कोई तो आया नहीं ट्रांसलेट करने के लिए, एक तो आया। हाँ, करे जैसा भी होगा देखेंगे बाद में। किए, और जिन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी दोनों का पढ़े, दोनों पुस्तक पढ़े, उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन ट्रांसलेट हुआ। तो फिर हम तो अंग्रेजी पढ़ने नहीं जानते, वो कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ हमें मालूम नहीं, लेकिन जो पाठक ने दोनों पुस्तक पढ़े, मैंने पढ़ा है दोनों। तो आप भी बता सकते हैं कि ट्रांसलेट इतना बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया था। तो वही है। और JCB में ये तीसरी बार है जब आप हैं यहाँ पे शॉर्टलिस्ट। मैं आपके पुराने लेखन पढ़ रही थी, तो 2007 में शायद EPW के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के लिए, आपका जो वो निबंध था, इज़ द दलित राइटिंग इन बांग्ला, जो कि मीनाक्षी मुखर्जी ने उसका अनुवाद किया था अंग्रेज़ी में। वहाँ पे आपने लिखा था कि बांग्ला में उतने दलित लेखक तो है नहीं, लेकिन दूसरी भाषाओं में जैसे मराठी में ऐसे बहुत लेखक हैं, दलित लेखक, जो काफ़ी मशहूर है, जो कि हम बांग्ला में नहीं देख पाते। तो 2007 से अभी तक इतने सालों में आपने बहुत किताबें लिखे, बहुत लोगों ने पढ़े दुनिया भर में, लेकिन अभी भी अगर मैं दलित लेखकों की बात बांग्ला में अगर मैं सोचूं, तो आपके अलावा शायद कपिल कृष्ण ठाकुर जी का नाम याद आता है, या फिर मनोहर मौली बिस्वास जी का नाम। इसके अलावा मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं आ रहे। तो यहाँ पे कोई बदलाव हुआ है? ये मैं और भी पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बंगाल जैसे राज्य में जातिवाद का मुद्दा तो मुद्दा है ही नहीं, ऊपर ऊपर से बोला जाता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये कोई मुद्दा। तो फिर और ज़्यादा दलित लेखक क्यों नहीं है बंगाल से? यूपी बिहार में दलितों के ऊपर में जिस तरह अत्याचार होता है, चप्पल पहन के अगर कोई ऊंची जाति का सवर्ण का सामने से निकल जाता है तो उसको पिटाई पड़ता है। शादी करने चला घोड़े में बैठ के तो उसको पिटाई पड़ता है। पानी के कुआं से एक बाल्टी पानी उठा लिया तो उसको मार पड़ता है, मार भी देते हैं। बंगाल में नवजागरण हुआ, वामपंथी आंदोलन का एक प्रभाव रहा, और इससे पहले बंगाल में बौद्ध धर्म का चर्चा बहुत ज़्यादा हुए थे। इसके लिए ये जो छुआछूत ऊपर से समाप्त हो गया, दिखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम कोई दलित अर्थनैतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति से कोई सवर्ण के ऊपर जाना चाहेंगे तब उसको खींचा जाएगा, नीचे गिराने का हर तरह का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम एक चंडाल जाति के हैं, हम खाना बनाते हैं, रसोईया हैं, हमारे खाना ब्राह्मण और हर उच्च जाति के लोग खा लेंगे, उसमें इतराज नहीं करेंगे। लेकिन वो खाना बनाए और हम खाएंगे, हमारा जूठा बर्तन वो उठा के ले जाए, ऐसा करेगा नहीं। हमारे कंधे पे हाथ रख करके वो रास्ते में चलेंगे, लेकिन हम उसके कंधे पे हाथ रख के ये रखने नहीं देगा कभी। बैठे हैं, गवाही हमारे पास। तो वहाँ क्या हुआ, जो लिखी पढ़ी शिक्षित जो लोग हैं, अभी एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 2 दलित 4 दलित प्राध्यापक बने, लेकिन 96 वो लोग हैं। तो उन 96 के दबाव उनको जीना दुबार कर देगा। लेकिन जो लिखाई पढ़ी जानते नहीं, मजदूर मेहनत करते हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, हम रिक्शा चलाते थे, हमारे साथ एक ब्राह्मण भी रिक्शा चलाता था। हाँ, दोनों को पब्लिक का पिटाई एक ही तरह होता था, हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। तो इसलिए ऊपर से भेदभाव
बिहार में किसी को बात कोई नाम बोलने से पहले वो बताएगा हमारा गांव में एक जात का तेली था, मतलब जात उसको पहले बताएगा, नाम उसको बाद में। हमारे बंगाल में ऐसा नहीं है। हमारे बंगाल में राजनीति, अर्थनीति, साहित्य, संस्कृति, जो बड़े बड़े क्षेत्र जो है, इसमें अगर कोई उनका पोजीशन को चैलेंज करे तो वो छोड़ने वाला नहीं है। हमें बहुत दबाया गया, बहुत प्रयास किया गया दबाने के लिए, लेकिन हम उनसे लड़े, राजनीतिक रूप में भी लड़े और शारीरिक रूप में भी लड़े। यानी लड़ाई जिस तरह होता है हर तरह लड़े, लड़के हमने छोटा मोटा एक जगह हमने बनाया। ये देखने के बाद में हमारे दलित लोगों को ये एक विश्वास आया कि हम भी अगर लड़े तो हमें भी जगह मिल सकता है। तो ऐसे और लेखक आपकी तरह बंगाल से आप देख रहे हैं कि प्रोत्साहित हो रहे हैं आगे आने के लिए, लिखने के लिए? हम दलित साहित्य अकेडमी का चेयरमैन है। हैं। हम हर महीना में कोई ना कोई गांव, कोई ना कोई जिला हम घूम घूम के दलित साहित्य अकेडमी का प्रोग्राम करते हैं। वहाँ ढेर सारे दलित लोग आते हैं, वो कहानी पढ़ते हैं, वो कविताएं पढ़ते हैं। तो एक उत्साह जागरूक हुआ पिछले 20 साल से। अब इसके लिए आप लोग बता पाएंगे कि हमारा जो योगदान कितना रहा, लेकिन इससे पहले लोग अपने को दलित कहने में भी कतराता था। देखिए आप ये जो बंगला एकेडमी जहाँ हम लोग घुसते थे डर डर के कि हमारा परिचय कोई जान जाए तो हमें शायद कुछ बोल सकता है। हम लोग किसी पत्रिकाओं में अपना लेख भेजते थे तो मनोरंजन व्यापारी नाम से लेख भेजने से वो छपता था नहीं, तब उसको मदन दत्त नाम से हम अच्छा लेख भेजते थे और वो छपा जाता। ये कौन से साल में था? शुरू में बिल्कुल शुरू में। 81 में। तो एक बार ऐसी मदन दत्त नाम से हमारा एक पुस्तक भी निकला था। तो जो उस समय एक टीवी का इंटरव्यू हुआ, खास खबर। अच्छा तो टीवी वाले जब आ गए तो फिर हमारे को छुपाने को जगह नहीं रहा। फिर तब हमने बताया कि मदन दत्त जो नाम है वो हमारा नकली नाम है, छद्म नाम है। असली तो मैं मनोरंजन व्यापारी हूँ, जात का चंडाल हूँ। तो उस समय से हम अपने को चंडाल और नीची जाति बोलने में डरे नहीं। और मीनाक्षी दी ने जब बोले ट्रांसलेट करके EPW में छपवा दिया तो सारा विश्व जान गए कि आपकी परिचय बहुत बड़े अनुवादक थे। तो इसके बाद हमको छुपाने की कोई ज़रूरत पड़ा नहीं। और हम दलित हैं और हम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। कई कई जगह हम लोग का लेख सवर्णों को चैलेंज का सामने भी डाल देते हैं। लोग जब बोलने लगते हैं कि अरे ये रिक्शा वाले का लेख तो आपसे बहुत अच्छा हुआ, तो वो लोग नाराज़ तो होते थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो हमारे लेख छपते गया और हमको पुरस्कार वगैरह जो है मिलता गया। Which just shows a translation, like, you know, Mr. Ramaswamy, you and I were discussing for a while yesterday. It's a very political act. And you have chosen 2 authors to translate, one like Mr. Perumal Mishra and then Manoranjan Byapari, who both have extremely strong political voices in their writings. Why did you choose to only translate essentially for them, these 2 writers? Right. The fact that I started translating was quite accidental. Yeah. But before that, I had been engaged as a social activist in the life of my city, Kolkata, working for the rights of squatters and slum dwellers and so on. So that defined me completely. So it was from that background that I heard Perumal Mishra's name and then said I would translate and then started reading him. So what he writes about the underdog, he challenges the social hypocrisies and the Bhadralok culture, all that. So my activist background, that resonated very much with my own activist background. Though I started translating him accidentally, but I was drawn to his work and remained with his writing because of my background. And when I was reaching the final stages of my Perumal Mishra translation, I started thinking about what I should do next.
And then I heard Manoranjan Byapari's name on Facebook. He didn't have a Facebook account then, somebody else was writing on his behalf. And his autobiography, Itibritte Chandal Jibon, was mentioned. So I thought I would translate that, and then he told me somebody else is already doing it, Shipra Mukherjee. And after a few days, he gave me this manuscript for Chandal Jibon. Right. And I took his consent and applied for a fellowship, and I translated it in Wales over 3 months. In 3 months, I translated 1,70,000 words. Oh my God. And the remaining 50,000 words, it took me 8 months to translate after coming back home. Because there in Wales, I was just sitting every day, morning to evening, just Writing and translating. So translation needs that. And I can also see now my thinking mentality is different from what it was 7 years ago. So now I can see very much that I'm not just translating this book or that book. The entire body of work of my translation is something, is selected, it's curated. So I'm curating voices from the margins for English readers. So it is a very political act by the works that I'm selecting, the authors that I'm selecting, the subjects that they are discussing. Absolutely. And मनोज जी, मैं आपसे जब ये अनुवाद की बातें हो रही है, we were talking about, हम बात कर रहे थे कि ये कैसा एक राजनीतिक एक एक्ट है जब आप कोई भी काम ट्रांसलेट करते, उसका अनुवाद करते. जैसे कि आपके किताब काले अध्याय में हमने देखा, उसका हिंदी जो ओरिजिनल है उसका नाम है काले अध्याय, लेकिन जब वो अंग्रेज़ी में अनुवाद हो गया, जो कि हासदा शोवेंद्र शेखर जी ने किया है, उसका नाम हो गया आई नेम्ड माई सिस्टर साइलेंस. अगर किसी को पता नहीं है तो लगेगा कि बिल्कुल दो अलग किताबें हैं. तो ये अनुवाद में क्या बदल गया? अनुवाद में जो चैप्टर्स में जो बदलाव हुए उसकी बात तो हम बाद में करेंगे. हाँ. जो टाइटल जो चेंज हुआ तो वो होता है. अब पिछला ही उदाहरण लीजिए आप, JCB प्राइज विनर जो खालिद जावेद साहब, उनका जो उपन्यास था पिछले साल का, हाँ. तो नेमत खाना नाम है उसका असली, और ट्रांसलेशन में अंग्रेजी का उसका नाम हो गया फूड ऑफ पैराडाइज. yes. तो दोनों बिल्कुल अलग शब्द है. उसका सीधा मतलब ये नहीं होता है. अनुवाद थोड़ा सा एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि एक तरह का क्रिएटिविटी का भी काम है, और वो कुछ छूट लेता है अनुवादक, और लेखक को थोड़ी छूट देनी चाहिए. तो वो ज़रूरी है, वरना वो बहुत मामला जो है ना वो सीधे सीधे एक तरह का इसमें से उठाया और इसमें रख दिया. आप किसी एक लेवल वाली या किसी एजेंडे वाली विचारधारा अगर लेके आ रहे हैं राइटिंग में, राइटिंग नहीं है, फिर वो ओपिनियन पीस हो गया. हाँ, वो आप अपना ओपिनियन देना तो आप एक आर्टिकल लिख लीजिए अलग से, उसमें आप कर सकते हैं. ये तो आर्ट का फॉर्म है, इसमें आप कैसे कर सकते हैं? अगर करेंगे तो गलत है. वो आपकी राजनीति हो सकती है, बिल्कुल स्पष्ट राजनीति, लेकिन आपका पहला कमिटमेंट जो होगा ना उस आदमी से होगा जो तकलीफ में है. बिल्कुल. आपका जो एजेंडे वाली जो पॉलिटिकल जो राजनीति चल रही है, आप उससे अगर उस आदमी को रिलेट कर रहे हैं, वो गलत है. बिल्कुल. एंड यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट आइडेंटिटीज, इसके बीच में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. हाँ जी. अनुवाद को लेकर के, वो जो बांग्ला में तो ग्वाला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्वाला. हैं? ग्वाला. ग्वाला. हिंदी में जो दूध जो दूता है, ग्वाला, दूध दूने वाला. ग्वाला. तो एक राइटर जो है वो गाय का तरह होता है. हाँ, वो समाज का जो सबसे कम कीमत घास, हाँ, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको खाता है. और देता क्या है? दूध. सबसे उत्कृष्ट जो चीज़ है उसको देते हैं. हाँ? बहुत बढ़िया लगा उनको. Such an analogy, no? It is very interesting. अब उस दूध को कोई छाना बनवा दिया, है ना? हिंदी में छाना बोलता है, पनीर बन जाता है. पनीर. अब एक राइटर जो है वो छाना को, ट्रांसलेटर जो है ऐसा ट्रांसलेटर है जो एक मोयरा के तरह हो, मिठाई बनाने. उस छाना से, हाँ, उस छाना से वो रसगुल्ला बना सकता है, संदेश बना सकता है,
कोई भी तरह तरह का मिठाई, हमने छाना उनको हाथ में दे दिया। अब वो ट्रांसलेट करते समय कौन वर्ड को बदल करके किसको रखना है, रखने से वो क्या होगा, ये जो आज़ादी उनको है। Absolutely. एक अभी एक जो पुराना उदाहरण जो बताया जाता है, हेमिंग्वे का जो उपन्यास था ओल्ड मैन एंड द सी, 400 पेज का उपन्यास था वो, लेकिन जब एडिट होकर के आया, पब्लिश होकर के, तो सिर्फ 110 पेज का। That's true. ये राइटर ने छूट दी एडिटर को। बिल्कुल. Because it's trust, Midnight isn't it? Children भी Midnight Children is well. editor And this is पूरा a question I घुमा actually wanted to ask Vikramajit, because we were just talking about, you know, how, what language would you want your work to be translated into later. We're talking about translations, we're talking about identities, and your book, interestingly enough, has, you know, we go back into the Mughal era. That one time in history, that one dynasty in history that's just been taken apart right now, as we know, in extensively. But you have sort of, your book deals with real people in history, but it's called a novel, so it's almost like a roman à clef, if I have to put it that way. But you're also trying to weave this beautiful world, which personally I felt like made me want to go back and revisit all the paintings and, you know, all the cultural contributions that the Mughals have made for us. Yeah, and like all periods, it has its contradictions and Yes. contributions. And I would rather focus on the positives of any historical period, actually. Right. Not necessarily the Mughal era, because that is very easily forgotten or neglected. Yeah. Because something else takes over, something grander takes over, and suddenly that becomes the more important thing. Of course, in history, everything goes through phases, and I'm of the optimistic belief that, yes, we will go through phases of certain downs, and then there will be something, there will be change. And to come to your question about novel fiction, writing about real people in real settings and real places, the novel itself is completely fictional. Yeah. But the people, my entire cast of characters, with the sole exception of one character, are real people who lived in real times and did very real work. And and we very easily forget when we go to a museum, or even in the modern day, when you look at artwork which we've got around us, or a building like this, belonging to a particular period, it's very easy to forget that actually they involved human energies. They didn't just happen. There were people who actually created a Haveli like this. There are people who painted those pitchwise. There are people who sculpted all the beautiful icons and deities and divinities in all our temples, in the city palace. All of that wonderful fresco work, which Tejaswini and I did a walkabout around yesterday. Right. All of those were ultimately designed and planned by somebody, and then actually made by somebody, down to the last brush stroke or the last little tapping of a chisel on a block of stone. When you actually start looking at it from that perspective, that there was a human energy which had its own life, and it had its own preoccupation, its own struggles, and of course they all did it for whatever form of earning. Sometimes in the case of Mansoor and some of his colleagues for titles. Yes. Yeah? But the titles actually came to them incidentally because of the work. Yes. They didn't purchase the titles. So when you're working with real people in real times, I think for a novelist, it's a huge responsibility, and it's a hugely daunting responsibility. Right. Because you're channeling into energies which are in this particular case some 450 years old. And you need to respect that. And you need to handle it with as much care and gentleness as the original makers. And we're only talking about the little miniatures now. Yeah. You know, very delicate instruments and very hard to source and prepare pigments. And you're talking about eyesight. You're talking about people who probably didn't live for very long. The average lifespan would have been, say, about 50. Yes. Yeah, and they were regular, everyday workers doing everyday work. It's just that they did it for an M. You approach them with respect, but it doesn't border on reverence. Yeah? You're not sort of... You're not being sycophantic. You're not at all.
no hagiography. So anything that you do has to be rooted in historicity, especially if you want to do historical fiction and not historical fantasy. Yes. So you need to, somebody has to be in a particular place, like in this Haveli on this day, at this point of time, doing what we're doing right now. Yeah? And they have to be alive, of course. So you approach them with respect and care and affection, even if you're having a little bit of mischief with them, as I have, and with gentle good humor. Right. And also because, when I was reading Mansoor, it was a very sensorial experience. It was very immersive. Like you were saying, that we are talking about people who existed 400, 500 years ago, and we don't really remember or know much of them any longer. So to be able to just enter their worlds, you've built them bit by bit, and it just reminded me, like I was saying, of Orhan Pamuk, Umberto Eco. So the fact that you're also an artist, you're a graduate of NID, and you have worked or still work as an artist, as a graphic designer. I used to work as a graphic designer. So has that side of you, the artist side of you, definitely it's informed your writing heavily as well, yes, right? Tremendously, and I owe a huge debt of gratitude to the institute and to my faculty and my teachers there in the 1980s. Because we were encouraged to question everything. Right. And to look at things with a new pair of eyes. So a work of architecture is not just a building. Absolutely. It's the arrangement of spaces, of ventilation, light, because these are living spaces. We're all living human beings. Yeah? So you need to constantly recognize that, and you need to put yourself away into the background. Because you're serving a purpose, you're serving a need, be it habitation or utensils we eat out of, books that we read. Books are designed. Right. Yeah? And design is so essential to everything that we do. Absolutely. Yeah. So yes, of course, tremendous, influence of my training and I've been very fortunate. Right. Yeah. And I guess we are going to have to wrap up soon, but I just want all of you to answer this one question that I will throw out to all of you as to what is the most exciting thing happening in the world of literature, especially South Asian literature right now, that you're looking forward to. Other than any particular author or genre, what has really been really struck me in recent days is there seems to be a proliferation of reading clubs and book clubs in India, at least judging by what I see on social media. Yes. And I think it's just so exciting. Even an initiative like books on the Delhi Metro. Yes. I mean, how wonderful is that to incorporate books and reading in different languages and different genres just into the daily life of commuters. Absolutely. Silent reading clubs have been popping up all over the place, where people just get together in parks, bring their book and read, probably discuss it afterwards. So this is very exciting for me. Much more than any particular genre or author, right? Because every kind of writing will find its own audience. Right. But that audience has to be there, and it has to be nurtured by these kind of initiatives. Absolutely. So I'm looking forward to seeing a whole lot more. I hope it happens. I hope so too. Manoj ji? उस तरह का कोई करिश्मा तो नहीं कह सकते हैं जिससे हम प्रभावित हुए हों, लेकिन अभी मैंने प्रभावशाली जो काम पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा नॉर्वे का काम है। और चूँकि हमने दौर गुजारा है सब चीज़ों को पढ़ते हुए, पहले रशियन और यूरोपियन लिटरेचर पढ़ा, फिर लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा, लेकिन ये जो कोना था नॉर्वे वाला वो छूट गया था। वहाँ कुछ चीज़ें पढ़ते हुए मुझे लगा कि उनके पास नेचर और मनुष्य के बीच जुड़ने का जो सीधा सीधा जो तरीका है वो है उनकी अंडरटोन। हमारे यहाँ उसमें कई तरह की सामाजिकता, कई तरह के विचार, कई चीज़ें एक साथ आ जाती है। वहाँ वो रिलेशनशिप बहुत मतलब नेचुरल है। तो इसलिए अब उसको करिश्मा नहीं कह सकते, लेकिन उनका प्रभाव मेरे जहन पर है बहुत। जी। I guess in the last 10-20 years in India, the explosion, maybe it's a silent explosion in translated works,
and in people devoting themselves to translation. More recently, I believe after the Booker for Gitanjali Shri, many people have wanted to take up translation. Yes. They've been inspired by that. So, as a translator, I think that's wonderful. From Bangla, we need a Mukti Bahini of translators, an army of translators. The other thing is, last year or year before last, I met a very young writer from a village in West Bengal, in Bankura district. So he grew up loving reading in Bangla, and then he became a construction mason and went to Kerala to work. And in the mess that they were staying, his other fellow workers, they were not interested in literature or reading. And so he had nobody to talk to or discuss literary matters with. So he left that job and returned to West Bengal saying, I'll take care of myself, this is not for me. And he works on his family farm, and he goes, sets up as a vendor in fairs, melas. He sits on the ground selling things for children and so on, and writes all the time. And he got the Sahitya Academy Yuva Puraskar last year. His name is Hamiruddin Midda. So that means irrespective of anything else, somebody is going to read and write and going to do it under the most adverse circumstances. So that's a great hopeful sign in these times. Yes, absolutely. Manoranjan? दक्षिण एशिया में इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने राइटर लिख रहे हैं, इतना पुस्तक निकल रहा है, हमको तो जानकारी नहीं है क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, सिर्फ बांग्ला उतना ही हम पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी का। तो अगर कोई लिखना चाहे, कोई पढ़ करके जो पुस्तक पढ़ने का जो मज़ा आनंद, वो तो हर एक का अलग अलग नज़रिया है, रुचि अलग अलग है। लेकिन कोई लिखना चाहे बांग्ला में, तो लिखने कैसा होता है ये अगर सीखना चाहे तो विभूति, मानिक, ताराशंकर, सतीनाथ, जाजावर, इन सबको तो पढ़ना चाहिए। पढ़ने से लिखने कैसे लिखता है और लिखने से लोगों का दिल तक पहुंचता है, इनसे पता चलता है कि इन लोग कितना बड़ा राइटर। आदित्य मल्ल वर्मन, तीतास एक्टी नदी, वो पढ़े तो कैसे लिखना पड़ता है और आम लोगों का जिंदगी कितना प्यार से पुस्तक में लाया जा सकता है, ये सब इन लोग से ही सीखना पड़ेगा। हम लोग को, हम बंगाली राइटरों के लिए बोलेंगे कि अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो इन सब को बड़ी बारीकी से पढ़ो, और सबसे ऊपर रह गया रविंद्रनाथ, इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो। पढ़ने के बाद में आपको लिखने का जो कला, उसमें आप माहिर हो जाओगे और लिख पाओगे। Thank you for saying that, because that's a very important takeaway and finding. Something we all subscribe to. Yes. And I was just thinking of the last couple of days. I think for me, the greatest thing that's happening, particularly in the country with all our festivals and prizes and things, is that we're building such a supportive and empathetic and friendly community of writers, all of us sitting and doing our own little thing, then coming together on occasions like this and getting to meet and exchange ideas, and that's very vibrant, and I think we need that. Thank you all for doing it. Absolutely. That's a wonderful note to wrap up on. Thank you so much to all of you for being a part of this brunch. Thank you. शुक्रिया आप सबको, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. Thank you so much. शुक्रिया।